Hello students, we are doing one theorem that if M is a closed subspace of a normed space N, then the quotient space N by M is a normed space under the norm defined as this. Further, we have to prove if N is a Banach space, then N by M is a Banach space. In the previous video, we have proved that N by M is a normed space under the norm defined as this. Now we have to prove that N by M is a Banach space. For that, we will take one Cauchy sequence in this quotient space. Let sequence Sm plus M be a Cauchy sequence in N by M. Then by definition, for epsilon 1 by 2, there exists positive integer N1 say such that norm of Sn plus M minus Sm plus M is less than 1 by 2. By definition of Cauchy sequence, for all Nm greater than equal to N1. In particular, if Sn1 is written over here, then also this is true. So let's take Sn1 is equal to x1, which will of course belong to capital N. Again, for epsilon equal to 1 by 2 square. For epsilon equal to 1 by 2 square, there exists another positive integer, say n2. Which can be taken as greater than equal to n1 such that norm of Sn plus M minus Sm plus M less than 1 over 2 square for all Nm greater than equal to n2. Here let's take Sn2 is equal to x2. Take Sn2 equal to x2, which will belong to n. Proceeding in the same manner, we have epsilon is equal to 1 by 2 raised to power k greater than 0. For this epsilon, there exist positive integers nk greater than equal to nk minus 1 such that norm Sn plus M minus Sm plus M less than 1 over 2 raised to power k for all Nm greater than equal to nk. Similarly, let's take Sn1 is equal to Snk is equal to xk. अगर n या m की कोई भी वैल्यू nk से या तो इक्वल है या ग्रेटर है तो ये होल्ड करता है. तो n की वैल्यू अगर nk के इक्वल हो तब भी ये होल्ड करता है. तो snk को xk ले लिया. अगेन फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 over 2 raised to power k plus 1. There exist positive integer nk plus 1 greater than equal to nk such that norm Sn plus M minus Sm plus M less than 1 over 2 raised to power k plus 1 for all Nm greater than equal to nk plus 1. Take Snk plus 1 is equal to xk plus 1, which will belong to n. We continue this process. So we have obtained a subsequence. We have obtained a subsequence xn plus m of sequence Sn plus M such that norm of x k plus M minus x k plus 1 plus M
will be less than 1 over 2 raised to power k for k is equal to 0, 1, 2 up to infinity. I will explain this very step in some more elaborated way like this. Why I can write it like this? Because we can see that for n is equal to n1, Sn1 was x1, मतलब S1 2 3 कुछ टर्म्स को छोड़ के जो n1 है, n और m कुछ भी दो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, कुछ को छोड़ के जो नंबर आता है n1 उसकी वैल्यू x1 है. इसका मतलब x1 S1 S2 S3 के कुछ बाद में आती है. इसी तरह x2 x3, तो ये x1 x2 x3 सो ऑन S1 S2 S3 सो ऑन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है. और ये जो सब सीक्वेंस है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है. वो कैसे? अगर हम इस स्टेप को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर Sn प्लस m माइनस Sm प्लस m की वैल्यू 1/2 रेज टू पावर k से लेस कब होगी? अगर n और m ग्रेटर देन इक्वल टू n k है. लेट्स टेक Sn की जगह पर Snk, तो क्या आ जाएगा यहां पर? ये आएगा Snk प्लस m माइनस Sm प्लस m. तो ये किससे लेस है? 1/2 रेज टू पावर k. और इसमें m क्या है? m ग्रेटर देन इक्वल टू nk है. अगर हम देखें तो nk प्लस 1 भी nk से बड़ा है, तो m की जगह पर nk प्लस 1 लिया जा सकता है. तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं Snk प्लस m माइनस Snk प्लस 1 प्लस m less than 1/2 raised to power k. So what is Snk? That is xk. And what is Snk plus 1? That is xk plus 1. So this is how I have written that norm xk plus m minus xk plus 1 plus m is less than 1/2 raised to power k. So if we take k is equal to 0, 1, 2 so on, we will get the above equations. We can also say from this equation that this sequence Sn plus m is a Cauchy subsequence. This is a Cauchy subsequence of this Cauchy sequence. Now we shall show that this Cauchy subsequence, जो सब सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस ही होती है. अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाली Cauchy सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, then our result is proved. So now our purpose is to prove that this Cauchy subsequence is convergent to an element of n by m. Then n by m will be Banach space. For this, let's take y1 be an element in x1 plus m and y2 be an element in x2 plus m. We have taken y1 an element in x1 plus m and y2 an element in x2 plus m. Till now we have this Cauchy subsequence and we have taken y1 in x1 plus m and y2 in x2 plus m. Therefore y1 minus y2 norm, if I put over here, this will be less than 1/2. Then we choose y3 in x3 plus m such that norm of y2 minus y3 is less than 1/2 square. Continue this process, we get a sequence yn in n such that norm of yn minus yn plus 1 is less than 1/2 raised to power n. पहले वाले x1 plus m जो कोसेट है उसमें y1 लिया और इसमें y2 लिया, नेक्स्ट वाले में फिर
यहाँ पर आ गया y1 माइनस y2, फिर y2 माइनस y3, सो ऑन yn माइनस yn प्लस 1 लेस देन 1/2 raised to power n. This means we have a sequence yn in n which is a Cauchy sequence. क्योंकि अगर दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स की नॉर्म लेस देन सम स्मॉल नंबर आए तो ये Cauchy सीक्वेंस होती है. तो वी कैन राइट दैट सीक्वेंस, देयरफॉर सीक्वेंस yn satisfying equation number 1 is a Cauchy sequence in n. And what is n? N is complete. We will come to that later. First, let's rewrite that, or we shall see again that this is a Cauchy sequence in n. Now, why we will have to remember that if m is less than n, then norm of yn minus or ym minus yn, or we can write yn minus ym, no problem, because this is a norm. So norm of ym minus yn can be written as norm of ym minus ym plus 1 plus ym plus 1 minus ym plus 2 plus so on yn minus 1 minus yn. So I have mainly what I have done, I have added and subtracted same terms, and last term is yn and first term is ym. Why I have done this? Because I have to use equation number 1. First we will apply triangular's inequality, and this will be less than or equal to norm of ym minus ym plus 1 plus norm of ym plus 1 minus ym plus 2, and so on norm of yn minus 1 minus yn. And this is less than 1/2 raised to power m. This is 1/2 raised to power m plus 1, and so on 1/2 raised to power n minus 1. Why? Because whenever we have n over here, 1/2 raised to power n is there. Similarly, ym minus ym plus 1 में यहाँ पर 1/2 raised to power m आ जाएगा. So we have how many terms? We have finite number of terms. Sum of finite number of terms is obviously less than sum of infinite number of terms. So in the next step, I have only increased the number of terms in the sum to infinity. This is an infinite GP series. So this is equal to the infinite GP series का sum होता है first term 1 minus common ratio. So this is 1/2 raised to power m over 1 minus 1/2, which is actually 1/2. So 1/2 raised to power m minus 1 is the sum of this infinite series. So I can write that norm of ym minus yn is less than 1/2 raised to power m minus 1. So ultimately I have norm of ym minus yn is less than 1/2 raised to power m minus 1 for all n greater than m. This justify my line which I've earlier said that sequence yn is a Cauchy sequence in n. Now it is more clear that this is a Cauchy sequence in n, and we know that n is a complete space. We know that n is a complete space. But for Cauchy sequence, what must be here? It must be all mn greater than equal to n. So we have to do one more step to prove that this is a Cauchy sequence. So we will try to write one more step to show that sequence yn is a Cauchy sequence. So for given epsilon, we can choose a positive integer n.
क्योंकि कॉशी सीक्वेंस तभी प्रूव होगी अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर n होगा। ये पिछले अभी तक जितने हमने स्टेप किए हैं सीक्वेंस yn लेने के बाद, वो स्टेप इसको कॉशी सीक्वेंस बनाने में जस्ट हेल्पिंग स्टेप्स हैं। सो वी हैव टेकन वन पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 1/2n-1 इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब हमने n को इतना लार्ज लिया है कि अगर मैं उसको 2 की पावर में करूं n-1 तो वो बहुत लार्ज नंबर हो जाए, और अगर मैं उसका रेसिप्रोकल लूं तो वो उतना ही स्मॉल नंबर हो जाए। और एप्सिलॉन जो है वो दैट इज टेकन टू बी एज सच दैट इज लिटिल ग्रेटर देन 1/2n-1 and this number is taken even smaller than एप्सिलॉन। मतलब n हमने इस हिसाब से लिया है कि 2 की पावर n-1 बहुत लार्ज हो जाए और उसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन जितना भी है उससे भी छोटा हो जाए। देयरफॉर नॉर्म ऑफ ym minus yn which is what? Which is less than 1/2m-1. And see, if m is greater than m and n are greater than equal to n, then m-1 is greater than n-1. 2m-1 is greater than 2n-1. So 1/2m-1 is less than 1/2n-1. So I can write in the next step that this is less than equal to 2n-1 and which is less than epsilon for all n/m greater than equal to n. Okay, we have taken epsilon, we have taken a positive integer n such that this is true, and now from all these steps I have ultimately norm of yn minus yn is less than epsilon for all n/m greater than equal to n. So now I can write that sequence yn is a Cauchy sequence in n. And n is complete, तो कंप्लीट स्पेस में जो भी कॉशी सीक्वेंस होती है वो उसी के एलिमेंट को कन्वर्ज करती है, इसीलिए ये कॉशी सीक्वेंस n के एक एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट से y belonging to n such that this Cauchy sequence yn converges to y. Now we shall prove that the sequence xn plus m converges to y plus m। अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये किसका एलिमेंट है? n by m का, क्योंकि ये n का एलिमेंट है और इसमें m ऐड कर दें तो ये n by m का एलिमेंट हो जाएगा। उसके लिए कन्वर्जन प्रूव करने के लिए कंसीडर नॉर्म ऑफ xn plus m minus y plus m. This is equal to norm of xn minus y plus m. So in this part of video we have obtained one Cauchy sequence in n by m. We have obtained one subsequence of this Cauchy sequence. This subsequence is also Cauchy subsequence, और हमने इसमें एक y1 और इसमें एक y2 लिया। वो y1 और y2 एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे जिसको ये करते हैं, और ये अल्टीमेटली हमारे पास सारे स्टेप्स करके यहाँ तक आया, और फिर हमने एप्सिलॉन और n कैपिटल N की हेल्प से इसको कॉशी सीक्वेंस इन n बताया। ये इसलिए बताया क्योंकि हमने यूज करना है कि n कंप्लीट स्पेस है। अगर n कंप्लीट स्पेस है और हम ये प्रूव कर दें कि ये कॉशी सीक्वेंस इसको कन्वर्ज करती है जो n बाय m का एलिमेंट है, तो ये कॉशी सीक्वेंस n बाय m के एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर जाएगी, जो हमने प्रूव किया, एंड दिस इज ए कंप्लीट स्पेस।